Good morning to all of you. So आज आमे preliminary mock test discuss करिबा. But before starting the discussion, मते एठी टिके क्लियर कर दियंतु जो माने ऑनलाइन अछंती कि ऑडियो एंड जो पीडीएफ टा मु ओपन करिछि सब क्लियर अछि कि नै बफरिंग होछि कि नै सो दैट क्लास रो स्टार्टिंग रो ही इशू रिजॉल्व हे जिवो. I am giving 2 minutes for this. जी ऑनलाइन अछंती केही जणे भी मते एठी टिके जणाई दियंतु कि ऑडियो वीडियो दिटा क्लियर अछि कि नै. Okay. ठीक अछि. I am assuming कि सब clear अछि. Let's start with the discussion. Per question मु 5 to 10 seconds देबी depending on the difficulty of the question. So first question हमर कहला कि व्यासकवि फकीर मोहन ओडिया भाषा सम्मान is associated with which of the following? Read the options and answer in 10 seconds. Answer is B. Lifetime contribution to Odia language and literature. ये जो व्यासकवि फकीर मोहन ओडिया भाषा सम्मान है एटा गोटे अवार्ड जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा द्वारा इंस्टीट्यूट करा जायछि. गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा and it is named after फकीर मोहन सेनापति जे कि तांको कोन कहा जाउतला तांको फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर कहा जाउतला. एंड ए अवार्ड टा इंडिविजुअल्स मान को रिकॉग्नाइज करे जो माने कि किछि गोटे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन देइचंती टुवर्ड्स द डेवलपमेंट हैला प्रमोशन प्रिजर्वेशन ऑफ द ओडिया लैंग्वेज एंड लिटरेचर. ओके. Next, artificial nest installation in Ganjam aims to conserve. Answer बामरो house sparrow. Both urban areas रा house sparrow population एबे कोन decline होतिबार देखिया को मिलछि due to तांकर loss of nesting site. In modern building कि pollution हैला कि pesticides use हैला food और insects एते भी अवेलेबल नाती सो ताको कंजर्व करिया पे आर्टिफिशियल नेस्ट बॉक्सेस इंस्टॉल करा जायछि कोडी अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज गुडा करे करा जायछि. आ गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा सच इनिशिएटिव एम टू इंक्रीज द स्पैरो ब्रीडिंग. Sparrow breeding and population recovery. Sparrow breeding and population recovery. Question number 3. We will study in our language. Aligns with
आंसर अब बी मदर टंग इंस्ट्रक्शन इन अर्ली चाइल्डहुड ये जो इनिशिएटिव टा वी विल स्टडी इन आवर लैंग्वेज इट प्रमोट्स एजुकेशन इन द मदर टंग एटू ऑप्शन रे क्लियर हे थियो मदर टंग रे एजुकेशन को से प्रमोट करूची और लोकल लैंग्वेज जहां भी इन अर्ली स्कूलिंग ओनली ओके पूरा थ्रू आउट द हाई स्कूल 11th 12th ए सब कॉलेज ए सब नहीं अर्ली स्कूलिंग टाइम रे एटा को प्रमोट करा जाउची एंड ये जो अप्रोच रहा इट ऑल्सो एम्फसाइज्ड कि जो एनईपी हमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जे कि रेकमेंड करूची मदर टंग की रीजनल लैंग्वेज को यूज करबा को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट ग्रेड 5 प्रिफरेबली ग्रेड 8 किंतु एटलीस्ट ग्रेड 5 जाय यूज हबा दरकार सो मदर टंग को यूज कले कोन हबो इट विल इंप्रूव देयर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लर्निंग आउटकम्स cultural connection of children and education. Okay. Next. IIT Bhubaneswar's bauxite exploration uses hyperspectral remote sensing. आईआईटी भुवनेश्वर जो बॉक्साइट एक्सप्लोरेशन पाएंगे हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग को यूज करबा को कुआ जाउची एबे हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग कोन हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग होची गोटे सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी जे कि जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को एनालाइज करे फ्रॉम द अर्थ सरफेस एनालाइजेस फ्रॉम द अर्थ सरफेस ठीक अछि एटा को जो विभिन्न प्रकार मिनरल्स रहिला से माने कोन लाइट डिफरेंटली रिफ्लेक्ट करंती सेइत पई कि हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग इट विल आइडेंटिफाई द मिनरल कंपोजिशन फ्रॉम स्पेस आउ एटा को पर्टिकुलरली यूजफुल अछि फॉर डिटेक्टिंग द बॉक्साइट डिपॉजिट्स जो माने करे दे आर रिच इन एल्युमिनियम मिनरल्स ओके तो आर एडवांटेजेस हमर कोन आसीबो कि एक्सप्लोरेशन फास्ट हबो नॉन इन्वेजिव मेथड एटा गोटे आर लार्ज एरिया को मैप करा जाय परिबो 5 गौर पॉपुलेशन इंक्रीज इंडिकेट्स सक्सेसफुल हैबिटेट मैनेजमेंट गौर पॉपुलेशन रे भी इंक्रीज देखा जाय छी एंड गौर रो साइंटिफिक नेम कोन बॉस गॉरस इटा होची साइंटिफिक नेम ये होची लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल स्पीसीज लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल स्पीसीज फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट एंड तांकर जो इंक्रीज ता देखा जाई छी काहे ना एबे फॉरेस्ट इकोसिस्टम तांका सराउंडिंग रे हेल्दी अछि फूड रिसोर्सेस तांकर एडिक्वेट मिलु छी इफेक्टिव प्रोटेक्शन तांको दिया जाउ छी फ्रॉम पोचिंग सो जो कंजर्वेशन मेजर्स गुडा सब कैरी आउट होउची सेति पई तांकर पॉपुलेशन रिकवर करी छी Mahanadi Water Dispute Tribunal was constituted under Answer is C. Interstate River Water Dispute Act 1956. Water dispute जो Indian states मानक भितरे हुए ताकू कहा अंडर रे रिजॉल्व करा जाए ताकू Interstate River Water Dispute Act 1956 अंडर रे रिजॉल्व करा जाए जेते बळे नेगोशिएशंस फेल हुए ताहले सेंट्रल गवर्नमेंट कोन करे गोटे ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करे आ महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2018 क्रिएट हेतला टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन what Odisha and Chhattisgarh regarding water sharing of the Mahanadi river ठीक अछि एटी गोटे एटी मन रखिबे आर्टिकल 262 of the constitution plus interstate एठी जो रहिला रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ये कोन करंदी ये लीगल फ्रेमवर्क फॉर्म करंदी फॉर रिजॉल्विंग द वाटर डिस्प्यूट्स Question number 7. Odisha's power distribution ranking improved due to free tariffs, reduced AT&C losses and operational efficiency, coal only generation, network closures. Answer about reduced AT&C losses and operational efficiency. AT&C losses रो full form कोन AT&C losses होची हमर aggregate technical and commercial losses जाको हमें कहिताउ they represent the losses in the power distribution system due to what due to transmission losses electricity theft billing
inefficiencies. ठीक अच्छे एंड जो एटीएनसी लॉसेस रे रिडक्शन देखा गले फाइनेंशियल हेल्थ जो अच्छी पावर यूटिलिटी रो इम्प्रूव होबो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव होबो ओके Aluminium FRP are widely used in what? Textile weaving, lithium ion batteries, river dredging, irrigation canals. Answer is lithium ion batteries and EVs. FRP कौन fiber reinforced polymer. Reinforced polymer. जे कि कौन करे जो combined with aluminium ताको जेतबेले aluminium सहित combine कर दिया जाए it creates a lightweight strong composite material आर ए जो materials अछि they are widely used in EVs ताको EVs रे यूज करा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रे काहेकि ना से माने व्हीकल रो वेट को रिड्यूस कर दियंती एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाती एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को भी एनहांस करती सो दे आर आल्सो यूज्ड इन द बैटरी enclosures and the EV components. Whale skeleton museum contributes to marine research and ecotourism. Obviously whale skeleton museum जदि हबो तार several multiple पर्पस भी अच्छी जेमती कि साइंटिफिक रिसर्च बूस्ट हबो एजुकेशनल अवेयरनेस हबो मरीन बायोडायवर्सिटी उपरे इको टूरिज्म बूस्ट पाइबो ओके OADMP represent shift from what? Read the options and answer. Answer habo amaro B crisis based relief to climate resilient preparedness. OADMP रो full form amaro एठी कोन ओडिशा आदर्श disaster mitigation program जे कि फोकस करे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रेजिलियंस उपरे रादर देन ओनली पोस्ट डिजास्टर रिलीफ एंड ए जो अप्रोच टा रहिला ओएडीएमपी रो अप्रोच रहिला इट इंक्लूड्स कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिशा एबे गोटे ग्लोबल मॉडल हिसाब रे प्रूव हेछि इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस स्पेशली आफ्टर द एक्सपीरियंसेस विथ साइक्लोन्स. Question number 11. Consider the following statements regarding the slave or Mamluk dynasty. Read the statements. Consider the following. Qutbuddin Aibak was a former slave of
Muhammad Ghori. It correct achi kana Qutbuddin Aibak was originally he was a Turkish slave of Muhammad Ghori, and Ghoriଙ୍କର ଯେତେବେଳେ death ହେଇଗଲା 1206 ରେ, he became the first ruler of Delhi Sultanate. Okay, and founded the slave or Mamluk dynasty. Iltutmish introduced the silver coin called tanka. Iltutmish এটা भी correct ଅଛି consolidated Delhi Sultanate. से monetary system introduce करथिले, silver tanka and copper, and also copper jital. Statement 3 incorrect achi. Razia Sultan was supported by the Turkish nobles throughout her rule. No, see strong opposition in fact face kartile. So 1 and 2. Consider the following statements regarding Balban. Read the options. He introduced the strict court etiquettes such as Sijda and Paibos. Correct achi. Ghiyasuddin Balban je thile, he tried to increase the prestige and authority of the Sultan. So se kon kartile strict Persian style court etiquettes introduce kartile, jahaku kuha jautila Sijda and Paibos. Okay, Sijda kahaku kuha jautila prostration before the Sultan, and Paibos hochi kissing Sultan's feet. Statement 2, he strengthened the power of the Chahalgani nobles. এটা incorrect ଅଛି. जो Chahalgani ଥିଲେ group of 40 Turkish nobles ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, they became very powerful earlier. Balban actually କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର power କୁ destroy କରିଥିଲେ. So this is incorrect. He emphasized the divine theory of kingship. এটা correct ଅଛି. Balban promoted the divine theory of kingship କାହିଁକି ନା ସେ claim କରିଥିଲେ Zillilahi title. Zillilahi title ମାନେ ହେଉଛି shadow of God on earth to justify the strong centralized authority. So answer number 1 and 3. Question number 13. Assertion Kaila Alauddin Khilji introduced strict market regulations in Delhi. True अछि. Alauddin Khilji से market control regulations Delhi रे से establish करथिले. The reforms were intended to maintain a large standing army at low cost. This is also true काना से maintain करथिले गोटे बहुत large standing army to defend against the Mongol invasions. Mongol invasions. Okay, so both assertion and reason are correct, and R is the correct explanation of A. Consider the following statements regarding Alauddin Khilji. First कहला कि he introduced the Dug system for branding horses. It is correct. Dug system माने ही होची branding horses, and एटा को कौन पे करा जाउतला to prevent fraud in the army. He introduced chehra to maintain descriptive roles of soldiers. This is also correct. Chehra एटा होची maintaining descriptive roles of soldiers. एटा record करुतला जो physical description अछि soldiers मानको सेटा record करुतला, so to prevent the fake enlistment. He abolished the Ikta system. No, this is incorrect, and actually Alauddin Khilji से Ikta system को abolish करी नतले. So this is incorrect. 1 and 2 are correct. Question number 15. Consider the following rulers of the Delhi Sultanate.
How many of the above rulers introduced significant administrative reforms? Actually कह गले इतुतमिश खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक ये चारि जण ही इंट्रोड्यूस करथिले इंपोर्टेंट रिफॉर्म्स जेमति कि इतुतमिश कोन करथिले से दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करथिले देन सिल्वर टंकास एंड कॉपर जिताल कॉइन से इंट्रोड्यूस करथिले इक्ता सिस्टम आल्सो ही इंट्रोड्यूस्ड अलाउद्दीन खिलजी कोन करथिले मार्केट कंट्रोल सिस्टम देन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद देन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स किसी से कैरी आउट करथिले दीवानी कोही फिरोज शाह तुगलक कौन करथिले कैनल्स करथिले फॉर इरिगेशन देन दीवानी खैरत एस्टाब्लिश करथिले जेडा गोटे चैरिटी डिपार्टमेंट थिला फिरोज शाह तुगलक कौन करथिले फिरोज शाह तुगलक या गोटे सेकेंड एठी गोटे इंटरचेंज हे गला दिस इज ऑफ फिरोज शाह तुगलक माय बैड मोहम्मद बिन तुगलक कौन करथिले टोकन करेंसी एंड दौलताबाद को करथिले शिफ्ट करथिले अलाउद्दीन खिलजी करथिले एठी मार्केट कंट्रोल सिस्टम मिलिटरी रिफॉर्म जो दग चेहरा हमें एठी डिस्कस कले सेटा सो चार जण जाक ही किछि ना किछि रिफॉर्म से कैरी आउट करथिले सो ऑल फोर हबो आंसर क्वेश्चन नंबर 16 consider the following pairs rulers and the major Iltutmish recognition of the Abbasid caliph then Alauddin Khilji market control and regulations Muhammad bin Tughlaq token currency Firoz Shah Tughlaq construction of canal just हमें discuss कले समस्त recall हे जिवो so 10 seconds मुझे दोची answer करिवगु answer is all four are correct question number 17 किसरा स्टेटमेंट देछि मोहम्मद बिन तुगलक को ऊपरे पचारची करेक्ट स्टेटमेंट कोन फर्स्ट कहि he shifted capital from Delhi to Daulatabad एटा तमे ऑलरेडी डिस्कस करले एटा करेक्ट अछि he shifted the capital then statement 2 कहि introduced token currency made of copper yes this is also correct his policies were carefully implemented and widely successful no this is not it is a mixture of brilliance and impracticability actually कुआ जाय so this is incorrect ambitious थिले किंतु poorly implement हेतिला policies गुडा so 1 and 2 हबो which ruler of the Delhi Sultanate introduced the policy known as blood and iron आंसर अब बी बलबन कहना बलबन से कोठु के जे रूल को 1266 टू 1287 से गोटे स्ट्रिक्ट हार्श पॉलिसी फॉलो करथले जाको ब्लड एंड आयरन बोली को जाउतला एंड पॉलिसी रो माने ही होची सिवियर पनिशमेंट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ठीक अछि मेन ऑब्जेक्टिव थिला कि रिबेलियंस मन को क्रश करिबा सप्रेस द नोबल्स एंड स्ट्रेंथन द सेंट्रल अथॉरिटी Consider the following statements regarding Firoz Shah Tughlaq. He constructed the irrigation canals, correct.
ऊपर डिस्कस कले ही एनकरेज हेरिडिटरी सक्सेशन ऑफ द ऑफिसेस करेक्ट करना से हेरिडिटरी सक्सेशन को अलाउ करूଥିଲେ इन गवर्नमेंट ऑफिसेस आर माने हैला कि जो ऑफिशियल्स माने थिले तांकर जो पुओ माने थिले देयर सन्स कुड इनहेरिट देयर पोस्ट which weakened the central authority of course and he centralized the administration strictly এটা incorrect अछि काना जो बाकी रूलर्स माने थिले जेमति बलबन हेले और अलाउद्दीन खिलजी हेले he did not strictly centralized the authority so answer अब हमरो 1 and 2 question number 20 assertion reason अछि read the question giving 10 seconds assertion कहला कि मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट फेल्ड ट्रू अछि काना से जो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करथिले जोडे कॉपर और ब्रास रु तयारी होतला सिल्वर कॉइन को रिप्लेस करबा को एक्चुअली सेटा फेल हेतला पॉलिसी एक्चुअली एम करथिला कि केमिति शॉर्टेज ऑफ सिल्वर को रिजॉल्व करा जिवो बट इट इंक्रीज द स्टेट रेवेन्यू सो दिस इज करेक्ट रीजन कहला द स्टेट लैक्ड mechanism to control the counterfeit coins yes this is also correct kind of government did not have an effective system to control the minting of coins so amara answer abo a 21 consider the following cities associated with the Delhi Sultanate rulers Siri Tughlaqabad Firozabad पचारची आ भितरु केतटी cities were found by the rulers of the Delhi Sultanate answer is all three काहींना Siri founded by Alauddin Khilji and Tughlaqabad be correct अछि it was founded by Ghiyasuddin Tughlaq founder of the Tughlaq dynasty Firozabad be correct अछि it was founded by Firoz Shah Tughlaq okay consider the following statements regarding the ICTA system ICTAs were revenue assignments करेक्ट अच्छी कहना इक्ता माने ही होची रेवेन्यू असाइनमेंट जोटा कि सुल्तान माने दोथिले ऑफिशियल्स और नोबल्स मानको इंस्टेड ऑफ पेइंग देम कैश एंड सैलरी इक्तादार्स कलेक्टेड रेवेन्यू एंड मेंटेन्ड ट्रूप्स एटा भी करेक्ट अच्छी कहना इक्ता सिस्टम अबोलिश हेई नतला ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड एंड जो स्टेटमेंट 2 टा हमर अछि इक्तादार सेटा रिस्पांसिबल थिला फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द असाइन्ड टेरिटरी मेंटेनिंग ट्रूप्स फॉर द सुल्तान इक्ता सिस्टम कहला कि अबोलिश हेई आइतला एटी मु जस्ट कहली कि अबोलिश हेई नतला सो आंसर अब हमरो 1 and 2 Who among the rulers of the Delhi Sultanate received the formal recognition of the Abbasid Caliph? Abbasid Caliph एटी ऊपर गोटे match the following जाइतला Abbasid Caliph इतुतमिश इतुतमिश 1211 ରୁ ନେଇକି जो 1236 ଯାଇଥିଲେ ସେ strengthened and legitimized the Delhi Sultanate 1229 ରେ कोण हैला से formal recognition receive कले from the Abbasid Caliph of Baghdad ठीक अछि and ए जो recognition टा तांको मिलिला he gave his rule religious legitimacy in the Islamic world question number 24 एटी question टा अछि then I will show you the options consider the following statements regarding Mongol invasion उपरे किछटा statements देइछि Mongol invasion read the statements
So first statement कहला कि the Mongols repeatedly invaded India during the Khilji period, which is correct. यानी जो Mongols माने थे से frequently invade करते को इंडिया रो को पार्ट नॉर्थ वेस्ट पार्ट को नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत स्पेशली ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ठीक अच्छे सो एटा करेक्ट ହେଇଗଲା अलाउद्दीन खिलजी strengthened the frontier defenses yes this is correct कहना अलाउद्दीन खिलजी से frontier defenses को strengthen करथिले by building forts maintaining last standing army strengthening the border administration the mongols successfully occupied delhi तो no this is incorrect कहना mongols से माने केबे भी successfully delhi को occupy करनथले during the sultanate period 1 and 2 he introduced welfare measures built canals and towns and allowed hereditary succession in administrative post already discussed above the rulers described above is K Firoz Shah Tughlaq. Consider the following statements regarding the Chahalgani. First statement kala it was a group of 40 powerful Turkish nobles. Yes, correct. Chahalgani ro au gote name hochi Turkan e Chihalgani. जहाँ माने ही हो जी group of 40. It consisted of powerful Turkish nobles of Delhi Sultanate. It was created by Iltutmish to assist in the administration. Correct achi. Balban strengthened this group to consolidate his authority. It is incorrect achi. Balban anku strengthen karinadle rather he suppressed and weakened them. Assertion reason. Assertion kala Alauddin Khilji imposed strict control over the nobles and prohibited social gatherings among them. This is true. Can Alauddin Khilji je thile, he imposed strict regulations on the nobility and the measures include jemti ki social gatherings upar ban lagai diya gala, marriages among nobles, strict surveillance etc. Reason kahichi he feared the conspiracies and rebellions by the powerful nobles. This is also true. Kind of जो restrictions लगा गला they were imposed because जो powerful nobles थिले से माने sultan against a conspiracy carry out करुथुले. So this is also correct. Both assertion and reason are correct. Consider the following administrative measures of the Delhi Sultanate. दाग सिस्टम चेहरा सिस्टम मार्केट कंट्रोल रेगुलेशन एंड टोकन करेंसी पचाची आ भितर केतेटा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इंट्रोड्यूस करा जायतिला आंसर इज ओनली 3 नाउ लेट्स सी कोटा कोटा दाग सिस्टम यस देन आउ गोटे कोटा हबो चेहरा सिस्टम एगुडी सब ऑलरेडी डिस्कस हिसरची एंड मार्केट कंट्रोल रेगुलेशंस आल्सो यस टोकन करेंसी नो कहना टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक को द्वारा इंट्रोड्यूस करा मोहम्मद बिन तुगलक सो ओनली 3 हबा हमारा आंसर. Which of the following rulers of the Delhi Sultanate constructed the city of Tughlaqabad? Answer is A. Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq जे कि तुगलक डायनेस्टी रो फाउंडर थिले से कौन करथिले से फोर्टिफाई करथिले तुगलकाबाद सिटी को नियर दिल्ली जोटा कि गोटे स्ट्रांग डिफेंस कैपिटल थिला. क्वेश्चन नंबर 30 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत ऊपर एक अच्छी स्टेटमेंट 1 कहला सल्तनत एक्सपैंडेड सिग्निफिकेंटली इनटू द डेक्कन ड्यूरिंग द खिलजी पीरियड. एटा करेक्ट अछि. अलाउद्दीन खिलजी का रियाइन टाइम रे दिल्ली सल्तनत एक्सपैंड कला टू द डेक्कन थ्रू द कैंपेन्स लेड बाय whom? Campaigns led by Malik Kafur. ठीक अच्छे. Provincial governors under the Sultanate were always loyal to central authority. No, always केमती loyal रही परी. Provincial governors they were not always loyal. Both revolt और rebellions भी सही time रे occur ହେଇची in different provinces. The Sultanate faced repeated Mongol invasions during the 13th and the 14th centuries. This is correct. Delhi Sultanate frequent Mongol invasions face करुतला 13th 14th centuries रे. हमारा आंसर अब 1 and 3. Consider the following statements regarding Article 19. एठी दीटा ऑप्शन अछि तापर आउ गोटे कि मे बी दीटा स्टेटमेंट थिबो सेठी. The freedom under Article 19 are available only to citizens. Article 19 originally guaranteed 7 freedoms. Freedom of press is explicitly mentioned in Article 19. I am giving you 10 seconds.
statement 1 correct अछि kana article 19 it is available only to citizen केवल citizen को पाई available not to foreigner or legal person. Statement 2 भी correct अछि kana originally article 19 रे 7 टा freedoms guarantee हेतला including what right to property. किंतु परे right to property को 44th constitutional amendment 1978 ପରେ ସେ କଣ କଲେ right to property को ସେତୁ remove କରିଦେଲେ article 19 ରୁ and made it a legal right. ଏବେ ସେ କଣ ଏବେ ଗୋଟେ legal right under article 300A. Freedom of press is explicitly mentioned in article 19. It is not correct kind of freedom of press explicitly mention ହେଇନି constitution ରେ supreme court interpret करछंती कि it has part of freedom of speech and expression under article 19 clause 1 subclause A. It be incorrect hegala. Answer abo 1 only. Assertion reason the Supreme Court struck down the section 66A of the IT Act. This is true. And eta ko case re hitla? Shreya Singhal versus Union of India 2015 रे एथरे कौन करतले सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 66A को IT Act 2000 रो struck down कर देथिले. Reason थिला it violated the freedom of speech and expression under article 19(1)(a). This is also true. Section 66A see actually करूथिला कोन it criminalized sending offensive and annoying, just a second, and annoying messages online. किंतु ए टर्म गुडा एक्चुअली ऑफेंसिव कोन annoying कोन बहुत वेग थिला एंड आर्बिट्ररी थिला. सो कोर्ट कोन कहला कि एटा वायलेट करूची फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, तो एटा को स्ट्रक डाउन कर दिया जाऊ. Consider the following grounds on which the state can impose restriction on freedom of speech. Sovereignty and integrity of India jibo article 19 clause 2 हिसाब रे. Public order jibo, friendly relation with the foreign states jibo. Lakshmikant रे एटा as it is provide हेची, but economic stability एमती किछि provide हेनी. So आमर answer abo 1 2 and 3. Consider the following freedoms under article 19. Freedom of speech and expression, assemble, then association कहला, and freedom to acquire property. Article 19 रो आबितरु केतरा एबे currently part. Question statement 1 correct अछि and eta कोथरे अछि article 19 clause 1 subclause A रे अछि. Then statement 2 भी अछि eta 19(1) subclause B रे अछि and statement 3 also correct C रे अछि and statement 4 टा actually incorrect अछि काइना right to acquire property सेटा को remove कर दिया जाय छी. just मु कहली कहा द्वारा 44th constitutional amendment act हम 1978 remove कर दिया गला. एबे एटा गोटे legal right under 300A article 300A हबो only 3. Which of the following rights is often considered golden triangle of the constitution? Answer of A 14, 19 and 21. 14 होची हमर कोन equality before law,
then 19 होची freedom and 21 होची life and personal liberty. ठीक अछि. And एटा केबे decide करा गला after मेनका गांधी judgment 1978, Supreme Court held that law depriving a person of liberty must satisfy all the three articles simultaneously. 36. Consider the statement regarding Article 20. Article 20 हिसाब से देखिए बोले it protects the ex post facto laws. This is correct कारण Article 20 clause 1 कौन कहूची से ex post facto laws को prohibit करची. ex post facto laws रे कौन हुए गोटे person को केबे भी गोटे act ପାଇଁ कि punish करा जाई परिबनी that was not a crime when committed. ଯେତେବେଳେ ସେ act ଟା commit ହେଇଥିଲା ସେଇ time ରେ ସେଟାକୁ crime ବୋଲି ମାନା ଯାଉ ନଥିଲା. ଠିକ ଅଛି. It provides protection against the double jeopardy. Yes, this is also correct. This is Article 20, Clause 2. It provides protection against double jeopardy. Double jeopardy माने कौन गोटे person को केबे भी दी थर same offense ପାଇଁ कि punishment दिया जाई परिवो नाही. It protects only citizens. Article 20 applies to both citizens and foreigners actually, unlike Article 19. So this is incorrect. Answer above 1 and 2. The protection against self-incrimination is guaranteed under which article? Article 20 clause 3. Dita 20 clause 1 और clause 2 पढ़ले एटा होची self incrimination against भी 20 clause 3 guarantee दउची. Assertion हला Article 21 has been interpreted very broadly by the Supreme Court. Then reason होची the Menka Gandhi case expanded Article 21 to include the due process. Assertion true अछि कारण Article 21 जेको interpret करा जायछि widely to introduce include several rights जेमति कि privacy हला livelihood education सब लक्ष्मीकांत आपण revise कले जानि परिबे. And reason हला कि मेनका गांधी case expanded Article 21. Yes, this is also correct. हमें ऊपर discuss कर सारलेनी. And article से कहा गला सुप्रीम कोर्ट कहिले कि that the procedure under Article 21 must be just, fair and reasonable. So, assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Rights. Consider the following rights derived from Article 21. Article 21 ru ए जो rights देइछि कोटा derive हेछि and which of the statements above are correct? Right to privacy, livelihood, clean environment. Yes, सब जाको एठी correct अछि. Right to privacy recognize केबे हितला? पुत्तस्वामी case 2017. Right to livelihood केबे हितला? Recognized in Olga Telly's case 1985. Then right to clean environment केबे हितला? Recognized through गोटे environmental jurisprudence through रू एटा हितला. Answer above 1, 2 and 3. Which Supreme Court judgment recognized right to privacy as a fundamental right? Justice K.S. Puttaswamy. Okay, Justice K. Puttaswamy versus Union of India 2017 रे एटा गोटे 9 judges bench थिला of the Supreme Court जे कि right to privacy को गोटे fundamental right हिसाब रे declare करथिले under Article 21. Question number 41. Consider the following statements regarding Article 22. एटा कहिला कि it provides protection against arbitrary arrest. This is correct. Article 22 procedural safeguard provide करे against arbitrary arrest and detention. A person must be produced before a magistrate within 24 hours of arrest. Yes, this is also correct. And it excludes एथिरे ना travel time जीवनी. ट्रैवल टाइम को छाड़ी की 24 घंटा भितर से पर्सन को मैजिस्ट्रेट आगे ताको प्रोड्यूस करबा को पड़िबो. दिस सेफगार्ड्स अप्लाई टू प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस. दिस इज इनकरेक्ट काने जो सेफगार्ड रहला डू नॉट अप्लाई टू प्रिवेंटिव डिटेंशन और एनिमी एलियंस. आंसर अब 1 and 2. Consider the following rights of arrested persons. Right to know the grounds of arrest, right to consult a lawyer, right to be produced before a magistrate within 24 hours. All the three are correct. Kaina Article 22 clause 1
ଆଉ article 22 clause 2 ए जो तीनटा राइट को गारंटी करूछंती all the three are correct. Which law in India allow preventive detention for national security purposes? Answer about National Securities Act. National Security Act 1980. It allows the government to detain individual without trial for preventive purposes. Without trial भी एटा ठीक अछि जदि से माने नेशनल सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर बा एसेंशियल सप्लाईज को थ्रेट करूथिबे. Consider the following statement. Article 23 ऊपर किसटा स्टेटमेंट देइछि. Read the statement. It prohibits human trafficking, it prohibits forced labor, it allows compulsory service for the public purposes. तीनटा जाक ठीक अछि. Article 23 clause 1 रे एटा जाउची. Then forced labor को prohibit करूची. It also prohibit the forced labor. माने गोटे person को तमे काम करिबाकू फोर्स करि परिबनी, कंपेल करि परिबनी without payment बा तांकर इच्छा विरुद्ध रे against their will. It allows complete service, compulsory service for the public purposes. এটা correct अछि 23 clause 2 ठीक अछि. So 1 2 1 3. Which article prohibit employment of children below 14 years in hazardous occupations? Article 24. Article 24 एटा कुहे कि जो छुआ माने 14 years और बिलो 14 years अछंदी सेमाने को फैक्ट्रीज बा माइंस पे किछि hazardous occupation रे तांको एम्प्लॉय करा जाई परिबनी. And it aims to protect children from economic exploitation and dangerous work condition. Consider the following statements regarding the child labor laws in India. Child Labor Act originally allowed child labor in non-hazardous industries. एटा correct अछि कना Child Labor Act केबे हितिला 1986 रे ठीक अछि. It prohibited child labor only in the hazardous occupation किंतु non-hazardous sectors रे सेमाने को allow करा जायछि. In 2016 amendment prohibited child labor in all occupation. This is incorrect. Can 2016 amendment prohibited employment of children below 14 years in most occupations. किंतु exceptions एथिरे भी अछि जेमति कि कहार family enterprise हला कि entertainment industry हला with terms and conditions सेमाने काम करि परिबे. Children may work in family enterprises under certain conditions. Yes, this is correct. एबे just मु कहली. So answer कोन हबा? Answer हमर हबा 1 and 3.
47 assertion कहला article 23 applies to both the state and private individuals जोटा कि ट्रू अच्छी unlike many fundamental rights जोटा कि only against state apply होची article 23 both state और private individuals को पाई apply होची reason कही trafficking and forced labor may be committed by the private persons this is also true कहना जो human trafficking हैला कि bonded labor की forced labor type of condition they can be committed by the private person so reason correctly explains assertion so both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A 48 consider the following pairs case देला आउ ता सहित associated right देइची एटी किछटा मैच करिकी नाउ केतरा पेयर एटी करेक्टली मैच हेची ताको पचारची मेनका गांधी ड्यू प्रोसेस अंडर आर्टिकल 21 yes ऊपर भी हम डिस्कस करछे इंट्रोड्यूसिंग द प्रिंसिपल दैट लॉ अफेक्टिंग लिबर्टी मस्ट बी फेयर जस्ट एंड रिजनेबल तो एटा कोथि जाउची ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रे जाउची Olga Tellis रे right to livelihood yes Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation केबे हितला 1985 सेतरे कोन हितला right to livelihood को recognize करा जितला as a part of article 21 pair 3 is also correct Shreya Singhal versus Union of India 2015 रे एथरे section 66A of the IT Act ताकू struck down कर दिया जाइतिला so all the three are correct which fundamental right is described by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution very easy article 32 Dr. B.R. Ambedkar article 32 heart and soul of the constitution कोतले and article 32 ना कौन right to constitutional remedies माने होची कि सिटीजन माने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबे फॉर देयर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट थ्रू रु कि किसी लोअर कोर्ट थ्रू रु जिबा किसी दरकार नै आर्टिकल 32 इज द करेक्ट आंसर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी एटा करेक्ट अछि काना एटा को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रे को जाइतला आर्टिकल 20 और 21 जो अछि से दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 कैन बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी एटा भी करेक्ट अछि आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया जाए नेशनल इमरजेंसी केस रे अंडर आर्टिकल व्हाट आर्टिकल 352 आर्टिकल 23 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी दिस इज इनकरेक्ट काना आर्टिकल 23 को सस्पेंड करा जाई परिबनी काना ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर को कवर करे जदि इमरजेंसी रे को सस्पेंड कर दिया जेबो ताले तो जहा जत्ते ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स्ड लेबर समस्त करिवे व्हिच आर कंसीडर्ड फंडामेंटल प्रोटेक्शंस सो दिस इज इनकरेक्ट आंसर हमर कोन हबो केतरा ठीक हैला गोटे दीटा 1 and 2 okay so that is it for today thank you for watching